Okay, so welcome everyone. In today's session, we are going to get started with preparation for Microsoft Technology Associate 98367 examination. This is going to be a 50-minute examination with objectives, questions asked. So we will be preparing approximately 9 modules, 11 modules will be covered with a pool of topics, and objective questions will be asked over these topics. So we have to prepare them. So we are going to understand the concepts along with the practicals. Okay. So when it comes to Microsoft Technology Associate Security Fundamentals, and when it comes to security, the first thing which we have to ensure to protect our data is a CIA triad, which is known as confidentiality, integrity, and availability. These are the three things which you have to ensure that your data is confidential, it is not accessed by unauthorized users. Second, it is integrated, which means if the data is transmitted from source to destination, we ensure that the appropriate packet without any modification has reached to the destination. And the data should be available all the time. Okay? Whenever you need to access the data, it should be available. There should be no denial of services kind of attacks should not run over your data or your solution. Okay. So these are the three things which you have to ensure. Along with what are the strategies or the core concepts of confidentiality, that's what we are going to explore. So in order to do that, confidentiality means you have to mitigate the unauthorized access to sensitive network assets. This you have to ensure. Okay. And you can accomplish confidentiality by these techniques. You can implement encryption of the data so that in case if somebody is trying to capture your data, if he is capturing your packet, the data will be in encrypted format. So no information will be accessed by the user. Along with authentication. Okay. So what happens with authentication? Whenever there is a data, there should be an authentication system available which will verify the identity of the user, and he will identify whether we need to authorize this user to access or to allow access to the data. So all that we can make in authentication. And then you have access controls. Okay, so there are multi-factor access controls available, wherein we have biometric access controls, card-based access controls, password-based access controls, retina eye scan-based access controls. There are many controls. Okay. So all these things are there to accomplish confidentiality. Is that clear? अब क्या होता है कि encryption नहीं है, authentication नहीं है, access control bypass हो रहा है, तो आपका data insecure हो जाता है. Okay. So let's have a quick demonstration of how an attacker can actually perform attacks over confidentiality. ठीक है? तो सबसे पहले हम confidentiality attacks देखें. So suppose I have a website available over here. Let's say I've gone to this website hackweather.in. Okay. Slash, let's say my company has this administration panel available over here. So this is an authentication portal. Okay. Wherein what we do is we authenticate a user, and if he is authenticated, then we will get access to the background. Okay. Now let's say I have my authentication there, admin@hackweather.in, and I have provided the password. Let's say this is known as something you know authentication. There are three types of authentication and access control systems, which I'm going to tell you. So the first one, which I'm accessing as of now here, this is a something you know authentication system. So I'll just type here authentication types, or you can say factors. So mostly there are multi-factor authentication. So authentication types are, one is something you know, okay, like a password or a PIN number. Second type is something you have, like an authentication card, credit card, bank card. Okay.
something you have, तो आपने कार्ड स्वाइप किया, एक्सेस मिल गया. Okay, and the third one is something you are. Something you are as in your palm scanning, your face scanning, your eye scanning. Okay, ये होता है something you are authentication. तो 3 factors of authentication होते हैं. इन factors को आप multiple combination में use कर सकते हैं. जैसे अगर आपने एक फैक्टर लिया समथिंग यू नो, तो फर्स्ट लेवल सिक्योरिटी, वन फैक्टर सिक्योरिटी हो. समथिंग यू नो, समथिंग यू हैव, दोनों आपने इंप्लीमेंट किया अपने सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन. ठीक है, जैसे क्या होता है, आप अपने जीमेल अकाउंट में लॉग इन करते हो, इट्स अ टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन. समथिंग यू नो एंड समथिंग यू हैव. तो समथिंग यू नो में यू हैव द पासवर्ड, समथिंग यू हैव में यू हैव द मोबाइल फोन. ओके, so the OTP will come to your mobile phone. That is a two-factor authentication. अभी देखो कुछ बैंक एटीएम से आजकल उन्होंने 3 फैक्टर ऑथेंटिकेशन कर दिया, जिसका मतलब समथिंग यू हैव द बैंक कार्ड, then when you swipe the card it will ask you for a pin number. Okay, so you can press the pin, which is something you know. And third, they also have this biometric fingerprint scanner or thumb scanner kind of, those options are also available. अब थंब स्कैन करके भी आप अपना ऑथेंटिकेशन कर सकते हो. So that is something you are authentication. तो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन होती है. अभी जो ऑथेंटिकेशन आप यहाँ पे सामने देख रहे हो, ये ऑथेंटिकेशन है समथिंग यू नो ऑथेंटिकेशन. This is a something you know authentication because I know this password and hence I can access this account. So there could be various attacks possible in order to bypass the confidentiality of the system. So अभी क्या है, इस पेज के पीछे जो डेटा है वो प्रोटेक्टेड है, let's say, because I have an authentication system. So everybody does not have an access to the data. Okay? So I log into this, and when I log in and if I'm identified and authenticated properly, then I'll log into the dashboard. Okay, wherein I can quickly check the information about my students, about the events and various other stuff we can do. Is that clear? Now let's see. अब जैसे मान लो मुझे इस सिक्योरिटी को बाईपास करना, we have to bypass the confidentiality of the security. How it is done? Let's have a look. So यहाँ देखो, so I've got some information of various users. When I'm authorized, I can actually perform various things, like I can see who all have applied, for what all courses they have applied, and I can see that because I'm authenticated now and I'm authorized to access this confidential information. This is not a public information for all. Okay. Now what we can do? Let's have a look. So मैं इसको sign out करता हूँ. I've gone to settings. I've log out from this profile. Okay. Again we are here. Okay. अब देखो क्या होगा. Now, how to bypass this authentication and how to attack over confidentiality. This is what we would like to attack. So let's say we have a web application over here. इस web application को bypass करने के लिए we generally use a tool which is a burp suite. ठीक है? Let's download burp suite. So let's go to burp suite. You have to download it. Okay. The burp suite scanner. It's a very nice tool when it comes to performing analysis. You can go for a community edition. Otherwise, there is a professional as well as an enterprise edition as well. Okay. So I would like to go to community tools. Like to download for Windows. Okay, so this is the latest stable version. There are other older versions available which you can explore over here.
Okay, let it get downloaded. By the time it gets downloaded, let's complete this. Okay. Access controls. The different confidentiality classifications. In the private sector, there's public, internal, and confidential. Okay, so there are various confidentiality classifications. So there are different sectors like private sectors and government agencies where data is identified and categorized in different categories when it comes to confidentiality. So the confidentiality is when it comes to private sector, like a private company or a firm. Okay, they what they do, they identify the information as public, internal, or confidential. There are three types of information. So if you have a public information which you want people to access, you can post it over your website and it can be accessed. Along with, there is an internal public data, which means आपकी कंपनी के अंदर के जो लोग हैं उनके लिए वो information use होती है to complete their tasks. And there is a confidential information. Confidential is as in जो बहुत ही important जो people हैं, only they need to know that information. Okay, is that clear? Along with, when it comes to government agencies, there is an unclassified information, restricted information, secret information, and top secret information. Top secret as in only the stakeholders or the officers of that particular project will get to know that. Okay? Is that clear? So as per private sector and government agencies, these are the different categories. Okay, these are the different categories of information which is identified as confidential. Now, so let's proceed further. In government agencies, there's unclassified, restricted, secret, and top secret. It's important to make sure that you classify all of your assets so that you can ensure that they're effectively protected with the right amount of security. Okay, is that clear? So we're done till here, and let's quickly observe. So we've got the burp suite downloaded. Run burp suite. Okay, so burp suite is a tool which is a proxy kind of tool. You can send request to a website. Okay, you can send the request to a website, and you can capture that request. You can modify the request which is going to the server. You can receive the response. You can capture the response. You can modify the response which is coming so as to make the behavior change of the website or the application. Okay, that's it. So मैंने इसे run किया. I've gone to next. Next. Would you like to continue? Yes. We'll install the community edition. Give you a free space. Select drive only have 151. Okay. So let's just make some space. Okay, so now I have made some space. And click on finish. So now your burp suite program is running. Okay, burp suite is installed now on your machine, and you can run burp suite community edition. Okay, so help improve the performance. Let's click on I accept. Okay, you can see that a new version 2.1 is also coming in. So if you want, you can update it. So we'll quickly get started with a temporary project. Okay.
go to next and start your work suite. So we are using version 1.7.36 and we are starting Verb Suite Community Edition. Can you see that? So this is a Verb Suite wherein you can quickly send a request, you can capture the response, you can modify the response, and you can hack the website. Is that clear? Update. So we'll go. There are certain options like verb, various options like project options, password. Then you can act as an intruder. You can act as a repeater. Okay. Proxy लगा के भी आप कर सकते हैं. There are so many things which you can actually do. Is that clear? अब देखो. अब हमें करना क्या है? हमें एक सर्वर को रिक्वेस्ट भेजनी है और जो भी रिक्वेस्ट जाएंगी वो हम वर्ब सूट के थ्रू अब हम उन रिक्वेस्ट को कैप्चर करेंगे और उन रेस्पॉन्सेस को मॉडिफाई करेंगे. ठीक है? इज दैट क्लियर? नाउ लेट्स सो कैसे करते हैं? लेट्स हैव अ लुक. यहाँ पे आप अपने टारगेट डिफाइन कर सकते हैं, यूआरएल्स पेस्ट कर सकते हैं, लोड कर सकते हैं, आप यूआरएल ऐड कर सकते हो नए यूआरएल्स जो आपको स्कैन करने हैं. ठीक है? So let's say I would like to scan a URL for this website. hackweather.in. ठीक है, ये authentication है. So I would like to run this. Okay. जा रहे हो आप? ठीक. यार एक काम करना. Okay guys, just hold on for a minute.
ओके गाइस, सो हमने प्रीफिक्स किया URL, लेट्स क्लिक ऑन इट. एक URL आपका ऐड हो गया, ठीक है. You have added an item to target scope. Do you want Burp Proxy to stop sending out of scope items to the history or other Burp tools? Will avoid accumulating project data for out of scope items. ठीक है. So कोई दिक्कत नहीं है. We'll see others as well. ठीक है. Clear हो गया ये? You can quickly add a target. So when you have added a target, you can perform proxy, you can go to spider, okay, you can check the website, you can scan this website completely so as to identify कि कौन से security issues हैं, okay. So you can identify all these attacks: command injections, SQL injections, tracing, file path traversal. You can see that there's a lot of attacks possible, okay. बहुत सारे अटैक्स, ये सब अगर आपको पता होंगे तो आप एक अच्छे कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रेकर बन सकते हैं, ठीक है. क्लियर? देन ये आपका अटैक टारगेट है, ठीक है. इंक्लूड कर सकते हो, कॉन्फ़िगर द डिटेल्स ऑफ द टारगेट ऑफ द अटैक. आप पोस्ट और पोर्ट आइडेंटिफाई करके यू कैन स्टार्ट अटैकिंग ऑन अ वेबसाइट, ठीक है. एज वेल एज आप रिक्वेस्ट, कंटिन्यूस रिक्वेस्ट भेज सकते हैं एज रिपीटर्स. फिर सीक्वेंसर, डिकोडर, कंपेयरिंग, एक्सटेंडिंग, प्रोजेक्ट ऑप्शंस, देयर आर सो मेनी ऑप्शंस अवेलेबल हो गए. इज दैट क्लियर? ठीक है. अब यहाँ पे क्या है, व्हेन यू क्लिक ऑन दिस, सो द इंटरसेप्ट इज ऑन. सो व्हाट वी जनरली डू, वी मेक यूज ऑफ प्रॉक्सी, ओके. प्रॉक्सी का हेल्प देख लीजिए. So what it does, it says the intercept tab is used to display and modify HTTP and WebSocket messages that pass between your browser and web servers. तो ब्राउजर से जो रिक्वेस्ट जाएगी वो पहले बर्ब के पास आएगी और फिर बर्ब सूट से वो रिक्वेस्ट वेब सर्वर के पास जाएगी. वेब सर्वर से जो रिस्पॉन्स आएगा वो पहले बर्ब के पास आएगा और फिर वो ब्राउजर के ऊपर डिस्प्ले होगा, so that you can modify the request and responses. Okay. The ability to monitor, intercept, and modify all messages is a core part of Burp. In Burp proxy options, you can configure interception rules to determine exactly what HTTP requests and responses are stalled for interception. ठीक है, ये आप पूरे define कर सकते हैं under the options. Is that clear? Okay. So Burp proxy uses listeners to receive incoming HTTP requests from your browser. You will need to configure your browser to use one of the listeners as its proxy server. So on port number 80 on our local machine, port number 8080, Burp is listening. So I want my Chrome browser to use my Burp as a proxy, and the packet will travel through Burp suite to the web servers. ठीक है, अब कैसे configure करते हैं? Let's have a look. So intercept हमारा भी on है. Now what I'll do, I'll go to Chrome. Let's. मैं Chrome पे गया. यहाँ पे मैं अभी login करूँगा तो I cannot log in. It says कि ठीक है आपको field डालनी पड़ेगी. मान लो मैं कुछ गलत डालता हूँ, devanshu@gmail.com and password something, some password. If I type in and if I try to log in, I won't log in into this system. Okay. It says oops, the password is incorrect. Okay. Now what I want is I want these requests, which is going from my browser to the web server hackweather.in, these should be recorded or intercepted by Burp suite so that we can modify the request and response. Okay, let's try that. So we go to settings, click on settings, go to the proxy. So in settings, you can quickly search for proxy. You can open proxy settings and go to LAN settings. Okay. And you can define a proxy. At what proxy server would you like to use? So I say I would like to use 127.0.0.1 on port number 8080. This is where proxy is listening. Okay, clear? अब मैं अपना burp on करता हूँ. Intercept on है. Now I would like to send the
रिक्वेस्ट. सो आई सेंट अ रिक्वेस्ट और अब आप देखो वर्ब पे ही रिक्वेस्ट आ गई होगा. ठीक है. सो व्हेन आई क्लिक ऑन फॉरवर्ड तो अगली रिक्वेस्ट आ जाएगी. तो अब यहाँ से एक रिफ्रेश रिक्वेस्ट गई. ये कह रहा है ये आपका कनेक्शन प्राइवेट नहीं है बिकॉज अभी हम प्रॉक्सी यूज कर रहे हैं. ठीक है. तो विल से नो प्रॉब्लम प्रोसीड टू हैक विद ऑर्डर. ठीक है. अब यहाँ पे एक रिक्वेस्ट आ गई. तो ये कहाँ जा रही है रिक्वेस्ट? द रिक्वेस्ट इज गोइंग टू admin 121 सिक्योरिटी with HTTP 1.1. ओके. द होस्ट इज hackweather.in. ये कनेक्शन रिक्वेस्ट जा रही है. ठीक है. अब आप देखो तो आप फॉरवर्ड करोगे जब तो ये रिक्वेस्ट वहां से चली जाएगी. मतलब इट विल गो टू द सर्वर एंड द पेज विल लोड. ठीक है. एंड इट सेज उप्स, यहाँ पे एक रिस्पॉन्स आया. मैंने जी स्टैटिक को भी फॉरवर्ड कर दिया. So this is how I'm collecting the packets which are going from my browser and I'm observing them on this. अब देखो अब यहाँ पे क्या आ रहा है? ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड इशू आ रहे हैं कि नहीं, ऑथेंटिकेट नहीं होता. On my website I have a page known as events 121/events.php, or else let's say I had students.php. एक पेज था हमारा students.php, but you cannot directly open it. You cannot access this. यहाँ पे students.php हमने ओपन किया. यहाँ पे एक रिक्वेस्ट आ गई है कि गेट रिक्वेस्ट गई है to open students.php from hackweather.in. Is that clear? ये आपके पैरामीटर्स हैं जो उसके साथ में गए हैं. आपकी हेडर्स की इंफॉर्मेशन है, hexadecimal information of that request. Okay. Now what I will do is, ये request गई है, इस request को मैंने forward कर दिया. Request गई, and now I need to identify कि इस request का एक response आना चाहिए. तो अभी it is waiting for hackweather.in has sent a request और अब मेरे पास वहां से एक response आ गया. ठीक है. मैं students.php मैंने खोला बट ये कह रहा है कि नहीं यार आप इसे खोल नहीं सकते हो क्योंकि hackweather.in ने आपको दोबारा कहाँ रिडायरेक्ट कर दिया है? ऑन अ वेबसाइट, ऑन सम पेज. ठीक है. तो जब मैं इसकी पेन टेस्टिंग कर रहा था तो हम क्या करते हैं, जनरली आइडेंटिफाई कर लेते हैं कौन कौन से पेजेस हैं. तो जब मैंने इसमें पहले लॉगिन किया था तो यहाँ पे एक और पेज था events.php के नाम से, events.php. ठीक है. जिसके थ्रू मैं hackweather के इवेंट्स डायरेक्टली ओपन कर सकता. तो मैंने एक रिक्वेस्ट यहाँ से भेजी. आई एम नॉट ट्राइंग टू, मतलब बिना लॉगिन के बस यूआरएल मैंने देखा, आई एम ट्राइंग टू ओपन दैट यूआरएल. अब यहाँ से क्या हुआ, एक रिक्वेस्ट आ रही है. ठीक है. गॉट दिस रिक्वेस्ट, मैंने इस रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड किया. ठीक है. अब events.php के लिए जो रिक्वेस्ट जा रही है, दिस इज द रिक्वेस्ट व्हिच इज गोइंग, गो टू hackweather.in. ठीक है. ये रिक्वेस्ट जा रही है जी स्टैटिक. ओके. अब ये वापस क्या कह रहा है कि भैया सिक्योरिटी पे आ गया ये. ठीक है. समझ रहे हो? अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, वी कैन परफॉर्म सर्टेन एक्शंस. ओके. यहाँ पे हम कुछ एक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं. लेट्स से व्हाट काइंड ऑफ एक्शंस वी कैन परफॉर्म, दैट्स व्हाट आई वुड लाइक टू show you. Okay. अब देखिए. So what we'll do, एक और मैं अभी ओपन कर रहा हूँ. Let's say Firefox ओपन करता हूँ. I'll show you the request which is going and the actual URL of the page. Go to hackweather.in. एक नया ब्राउजर ओपन किया, hackweather.in/admin121. ठीक है. मैंने रिक्वेस्ट फॉरवर्ड किए.
ठीक है, ये देखो ये सारे पेजेस हैं जो ये इवेंट्स की रिक्वेस्ट गई हुई है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें रेस्पॉन्सेज ऑब्जर्व करना है। ठीक है, इवेंट्स की रिक्वेस्ट गई हुई है, इवेंट्स हैक विद एडमिन ये टाइटल है उस पेज का। अब आपको रेस्पॉन्सेज ऑब्जर्व करना है। ठीक है, यहाँ पे आपकी रॉ रिक्वेस्ट जारी थी। अब आपने क्या किया, आप HTTP हिस्ट्री में गए, आपके पास यहाँ पे रेस्पॉन्स आप देख रहे हो। अब रेस्पॉन्स में देखो क्या हो रहा है, वहां से एक एरर आ रहा है 302 मूव परमानेंटली। जब हम events.php ओपन करें, वो रिस्पॉन्स क्या कह रहा है कि सर्वर से एक ये रिस्पॉन्स आया है x पावर्ड php। ठीक है, मैं इस रिक्वेस्ट को दोबारा भेजना चाहता हूँ। आई विल सेंड दिस रिक्वेस्ट अगेन। ओके, इस रिक्वेस्ट को मैं एक बार दोबारा भेजूंगा और इसका जो रिस्पॉन्स आएगा वो रिस्पॉन्स में मॉडिफाई करूँ। ठीक है, रेस्पॉन्स में अगर तुम यहाँ देखो तो ये क्या कह रहा है, उसका हेडर इसका लोकेशन को ले जा रहा है सिक्योरिटी के ऊपर, कि अगर आपका सेशन सेट नहीं है या अगर आप ऑथेंटिकेट नहीं हुए तो घुमा के दोबारा लॉगिन पे ले जाए। ठीक है, ये रेस्पॉन्स है। नाउ व्हाट आई कैन डू इज आई कैन डिलीट दिस रिस्पॉन्स। लेट अस डिलीट दिस रिस्पॉन्स। यू कैन डिलीट दिस रिस्पॉन्स। हेडर्स HTML रेंडर कर सकते हो। ये आपका HTML पेज है जो इवेंट्स का पेज वहां से बैकग्राउंड से लोड हुआ है। ठीक है, आप ये देखो ये पूरा कोड है इवेंट्स का ऑलरेडी बना हुआ है। यू कैन डायरेक्टली रेंडर इट। ठीक है, रेंडर में जब आप देखो तो ऑलरेडी पेज दिख रहा है जबकि हम लॉगिन नहीं थे। ठीक है, फिर भी हमें पेज दिखाई दे क्योंकि वहां से रिस्पॉन्स आ गया। ठीक है, लेकिन हो क्या रहा है, क्योंकि वहां पे कोड ऐसा लिखा हुआ है कि वो कह रहा है कि भैया आपको सिक्योरिटी पे रिडायरेक्ट कर देगा वो, क्योंकि आप लॉगिन नहीं हो। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। ठीक है, इंटरसेप्ट ऑन है, हमने रिक्वेस्ट भेजी। ठीक है, मैंने यहाँ से एडमिन 121 पे गया, events.php मैंने ओपन किया, मेरे पास रिक्वेस्ट आई events.php को ओपन करने की। ठीक है, ये मेरी events.php ये रिक्वेस्ट आई है। ठीक है, इस रिक्वेस्ट को मैं फॉरवर्ड करूंगा इंटरसेप्ट के अंदर। मैंने रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कर दी। रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करने के बाद मेरे पास एक रेस्पॉन्स आएगा। ठीक है, अभी क्या कह रहा है, ये रेस्पॉन्स की जगह पे अभी मैं रुक गया हूँ। ठीक है, एंड आई एम गोइंग टू HTTP हिस्ट्री एंड आई एम सेइंग यहाँ पे ये रेस्पॉन्स मुझे मिला है। ठीक है, ये इवेंट्स है आपका, ये आपका रेस्पॉन्स है, ये आपके रॉ पैकेट्स हैं। ठीक है, ये आपका सिक्योरिटी है। अब आप इसको एडिट कर सकते, यू कैन मॉडिफाई दैट दिस रिस्पॉन्स। समझ रहे हो? ठीक है, तो जैसे देखो hackwitha.in खुला हुआ है, hackwitha.in में events.php हमने खोला, ये हमारा रेस्पॉन्स आया। रेस्पॉन्स आप मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, देखना पड़ेगा मॉडिफिकेशन किस जगह पे आएगा। कई सारे अलग अलग पेजेस में, ये देखो एडमिन 121 इवेंट्स कोर्स रिसोर्सेज एससी 2016 2019 ये सारी डायरेक्टरीज उसने एक्सप्लोर कर ली ऑलरेडी। ठीक है, जबकि मैंने इसे अभी स्कैन भी नहीं किया है, बट जैसे जो भी मैंने ओपन किए हैं साइट हैं जो भी खुली हुई हैं उसकी पूरी एक लिस्ट बन के आ रही है मेरे पास। ठीक है, यहाँ पे अलर्ट्स भी आ रहे हैं। ठीक है, अब देखो सो हम प्रॉक्सी पे हैं, तो आप यहाँ पे ये देख सकते हो कि इंस्टेड इवन आपको लॉगिन करने की जरूरत नहीं पड़ी, बट आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन पूरी दिख रही है। रिस्पॉन्स आपके पास ऑटोमेटिकली आ गया है। ओके, ठीक है, इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है?
क्या तो अगर आप ये मॉडिफिकेशन कर लेते हैं तो अब आपके पास कोड आप बैकएंड का देख सकते हैं, विदाउट एनी पासवर्ड आप उसके अंदर एक्सेस कर लो। ठीक है, इसलिए प्रॉक्सी का बेनिफिट हो, प्रॉक्सी का बेनिफिट ये है, यहाँ पे भी क्या हुआ, कॉन्फिडेंशियलिटी बाईपास, कि डेटा जो है वो ऑथेंटिकेटेड है, बट स्टिल क्योंकि वहां से रेस्पॉन्स आ रहा है, आप उसे क्विकली देख पा रहे हैं। ठीक है, इवन विदाउट हैविंग द राइट पासवर्ड। दिस इज एन अटैक ऑन कॉन्फिडेंशियल। इज दैट क्लियर? समझ में आई बात? ठीक है, इसको थोड़े और अच्छी तरीके से रन करते हैं ताकि ब्राउजर को आप देख पाए। ये भी थोड़ा सा ना नया वर्जन है आई थिंक। ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट्स का पेज आ रहा है, रेंडर पे क्लिक करोगे तो जो मैंने तुम्हें दिखाया था ऑलरेडी डेटा, अगर इसको तुम स्क्रॉल करके नीचे जाओ तो देखो सिलेक्ट कोर्स, और वो सारे स्टूडेंट्स जो तुमने लॉगिन करके देखे थे तुम्हें यहीं पे दिख रहे हैं। आलोक कुमार गोल्डी with the name, number, and other information, Anuj Pandey, what course, what information। ठीक है, so instead आपको पासवर्ड की भी जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन ड्यू टू बैड कोड वी आर गेटिंग द रेस्पॉन्स। ओके, दिस इज कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रेकिंग। समझ रहे हो? ठीक है, तो इसलिए अगर आपके पास ऐसा कोई टूल है जिसके थ्रू आप एनालिसिस कर सकते हैं मैनुअल, तो आप इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे आउट ऑफ द एप्लीकेशन। तो ऐसे तो बहुत सारी वेबसाइट्स हो सकती हैं जहाँ ऑथेंटिकेशन लगा हुआ बट आउटपुट आ रहा है, रिस्पॉन्स आ रहा है। क्लियर? समझ गए? ठीक है, तो दिस इज नोन एज बाईपासिंग द कॉन्फिडेंशियलिटी। Yeah, you can do it on any website. Okay, clear? It will be accessed like a normal user. ठीक है, clear? Now, so अब इस तरीके से there are other options also which you can do. Scanning perform कर सकते हो, include कर सकते हो onto the target, okay, and define the payload. There are a lot of stuff you can do. ठीक है, समझ में आ गया ये क्या ऑब्जेक्टिव है, कॉन्फिडेंशियलिटी क्यों जरूरी? Now let's see. So let me just close it. Just reset the proxy here. Okay. Is that clear?
let's go to the next one. Next one is integrity. Let's quickly observe what is integrity. The core concept of integrity. Integrity, and as it relates to data and information security, means the protection of data and information against unauthorized or accidental changes. Integrity, by its very definition, means consistency, accuracy, and validity. Maintaining your data integrity. Data and information integrity can be accomplished through the use of security programs which manage and detect changes to your information, permissions to control access to assets, and auditing and accounting processes to record changes. Okay, so these are the ways with which you can maintain the data integrity. You can write security programs which can detect the changes in data, as well as you can allow permissions, control access, permissions, management, privileges, all these stuffs are maintained in order to maintain integrity of the data. Along with, you have to audit, account the data in order to identify the changes which are done so that you can ensure. इसमें और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे डेटा की इंश्योरिटी करनी होती है कि सोर्स से डेस्टिनेशन जब भेज रहे हो, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक सो एज टू इंश्योर कि डेटा जो आपने सोर्स से भेजा है वो डेस्टिनेशन पे प्रॉपर पहुंचा है. ओके, एंड देयर आर अदर स्टफ एज वेल कि अगर मान लो मैं फेसबुक मैंने अपना अकाउंट ओपन किया है, ठीक है, तो फेसबुक जब रिस्पांस भेज रहा है तो मेरे मैसेज का रिप्लाई मेरे को ही मिलना चाहिए. ऐसा नहीं कि बगल वाले ने भी फेसबुक खोल रखा है और उसके बाद मैसेज का रिप्लाई आया. So this is data integrity. Okay, only the right user with the right identification and authentication access and authorization access can access the data. Okay, so that is data integrity. Along with the third one is availability of the data, which means it should be available whenever a user wants to access the data. Is that clear? So ये कुछ principles हैं जो आपको पता होने चाहिए, so that you can identify how security is ensured. Okay, is that clear? So that's all for the day. We'll continue our next topic tomorrow. Thank you so much for being available.